Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are fine. It's Zara Arif and today the topic is the nature of basic economic problem. First of all, I'm going to tell you about the Cambridge syllabus which is going to come for 2027, 2028 and 2029. These 3 years, इन तीनों years के लिए वो कौन से syllabus में हमारे पास content है. So the basic economic problem ke under we have main 4 categories. That is, number 1 is the nature of basic economic problem, then factors of production, opportunity cost, and the last one is production possibility curve. So in this lesson we are going to discuss about the nature of basic economic problem in detail. So in nature of basic economic problem, the Cambridge says that we have to cover these all areas. So these all areas are like finite resource and infinite wants, definition of basic economic problem, the concept of scarcity, examples of basic economic problem in context of consumer, workers, producers, and government. So moving forward, resource allocation. So in resource allocation they say that we need to discuss about that what to produce, how to produce, and for whom to produce. And the last thing that in this we need to cover about economic group, good and free good. So what is the difference between these two goods, and for that we need to know about these definitions and examples, right? So moving forward, let's start from the basic economic problem. As I guess that you all know that our basic economic problem is that we have unlimited wants but limited resources. Now what does it mean by unlimited wants and limited resources? Like, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि the resources, let's suppose if I'm talking about money, the money which I have is limited. मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, but my wants are unlimited. Like मैं ये कहती हूँ कि अच्छा I want to buy a house, I want to buy a car, I want to buy an airplane, I want to buy an iPhone, I want to buy laptop, MacBook, a lot of things. मेरी जो काउंटिंग है, मेरी जो विशेस हैं, मेरी जो वॉन्ट्स हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी. सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं दैट इकोनॉमिक वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज विच वी हैव आर लिमिटेड. तो प्रॉब्लम तो आ गई ना. मतलब अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है. अब इन सबको हम फुलफिल तो नहीं कर सकते. So for that we need to make a choice. We need to make a choice that which thing we need to get and which we need to forego. Right? कौन सी चीज हमने choose करनी है, कौन सी हमने forego करनी है. So it means that there come the concept of choice. The concept of choice means that as we have unlimited wants but limited resources, so it means we are facing the problem of scarcity. Scarcity means that we have limited wants ज़्यादा है, उसके मुकाबले में we have limited resources. So we are forced to make a choice. So forced to make a choice means what to produce, how to produce, and for whom to produce. These are 3 fundamental questions which are addressed by every economic system. We will discuss it about these 3 questions in detail in future in the next upcoming lessons, inshallah. So, scarcity. As I told you earlier, that scarcity means that our wants and needs are unlimited, but our resources are finite. So it means that we are facing a problem of scarcity. We do not have enough resources to fulfill all of our wants. So इसीलिए हम कहते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कमी है. Scarcity means कमी. So
एग्जामिनर कहता है, कैम्ब्रिज कहता है that we need to discuss this concept of scarcity with all these in perspective to consumer, worker, producer and government, कि consumer scarcity को किस तरह से फेस करते हैं, वर्कर्स कैसे फेस करते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट्स ये किस तरह से फेस करें. कंज्यूमर, एवरीबडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कहा है कैम्ब्रिज में दैट यू नीड टू चूज अ सब्जेक्ट. अब आप सारे सब्जेक्ट तो चूज नहीं कर सकते, आपने कुछ सब्जेक्ट चूज करना है. सिमिलरली अगर आपने जॉब करनी है तो आप सोचोगे अच्छा मैंने टीचर बनना है कि मैंने डॉक्टर बनना है. यू आर अगेन चूजिंग. इट मीन्स आप एक टाइम पे दोनों काम नहीं कर सकते. सो बीइंग अ कंज्यूमर एवरीबडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. अगेन इसी तरह वर्कर है. जैसे कि अगर वर्कर है तो वर्कर डिसाइड कर रहा है कि मैंने फ्री रहना है कि मैंने काम पे जाना है. ठीक है, मैंने इस ऑफिस में जॉब करनी कि दूसरे ऑफिस में जॉब करनी है, मैंने लॉयर बनना है कि मैंने डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है. ठीक है, सो एवरीबडी इज चूजिंग. अगेन प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? अब प्रोड्यूसर है, आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, तो मेरे पास ऑब्वियसली लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. So I need to think about that how I have to allocate my resources in such a way that I can get maximum benefit. Which product I need to make, उसके लिए मुझे कितना लैंड लगाना है, कितना लेबर लगानी है, कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है. अब सारी प्रोडक्ट्स तो मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कोई ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगी, डिसाइड करूंगी जिससे मुझे शायद प्रॉफिट ज़्यादा हो. एंड सिमिलरली गवर्नमेंट भी इस प्रॉब्लम को फेस करती है. हाउ गवर्नमेंट फेसेस दिस? Now government have the revenue, government के पास budget है. Now government need to think about it. Either I need to I need to allocate it on healthcare or on education. Like nowadays the situation which is prevailing in our country, so government need to think either it should invest on defense or on roads. Obviously now the priority of the government would be defense. So as we know that everyone is facing this problem, either वो consumer है, worker है, producer है या government है, everyone is facing this problem because everyone has limited resources, so they have to make a choice. That is the problem of scarcity. I hope कि यहाँ तक समझ लग गई होगी आप लोगों को. Next, as I told you earlier that we need to allocate our resources. तो अब resources को इस तरह से allocate करना है कि okay, what to produce, हमने produce क्या करना है, how to produce, कैसे produce करना है, कितनी land लगानी है, कितनी labor लगानी है, and for whom to produce, किसके लिए produce करना है. So here what to produce means which goods and services should be made. Whenever we are going to start any business, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा हमने बिजनेस करना कौन सा है, कौन सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है. फिर अच्छा अगर प्रोड्यूस करना है तो इसको लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ मैंने स्टिचिंग यूनिट लगाना है, मैंने सीना शुरू करना है, तो मैंने अब करना क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस. मैंने क्या हाथ वाली मशीन यूज करनी है या फिर मैंने मशीन इलेक्ट्रिक वाली मशीन यूज करनी है. ठीक है. सिमिलरली अगर एम्ब्रॉयडरी है तो मैं कहती हूँ एम्ब्रॉयडरी हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए कि मशीन एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए. नो हु टू प्रोड्यूस फॉर, मतलब अब मैं किसके लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ, आइदर फॉर द एलीट क्लास और द मिडिल इनकम ग्रुप और द लोअर इनकम ग्रुप. अच्छा ये जो 3 डिसीजंस हैं ये डिपेंड करता है अपॉन द मार्केट systems कि आपकी इकोनॉमी किस तरह की है. Either these decisions are taken by the government or these decisions are taken by the people or by the both. ये हम again in detail in future में पढ़ेंगे because we are going to discuss in detail about these market system. So अभी तक क्या है, resource allocation में what to produce, how to produce and for whom to produce. ये कौन decide करेगा इसको हम बाद में देखेंगे. But these are 3 fundamental questions, like basic questions of economics. अगर कोई आपसे पूछता है कि what are the main questions, what are the 3 basic economic questions, तो आप कहेंगे what to produce, how to produce and for whom to produce. Then the last from this topic is economic good and free good. Now economic good is a product which
requires resources to produce it. मतलब इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ये गुड्स स्केर्स होती हैं. दीज आर नॉट अनलिमिटेड. जैसे कि फूड है, स्केर्स है, अनलिमिटेड नहीं है. क्लोथ्स हैं, कार्स है, एनीथिंग जिसको हम खुद बना रहे हैं, वी आर सेल्फ आर मेकिंग इट, हम अपने रिसोर्सेज को यूज करके बना रहे हैं. दीज आर ऑल इकोनॉमिक गुड्स. बट द फ्री गुड्स आर नॉट स्केर्स. They have no opportunity cost. Like these are the gift of nature. जैसे कि एयर है, everybody is breathing it. हम किसी को मना नहीं कर सकते कि भाई ये हवा मैं ले रही हूँ आपने नहीं लेनी, ऑक्सीजन मैं ले रही हूँ आपने नहीं लेनी. सिमिलरली मैं किसी को सनलाइट लेने से मना नहीं कर सकती कि भाई ये सनलाइट अभी मैं ले रही हूँ, आप ये सनलाइट नहीं ले सकते. These are the free goods. These are the gift from nature. Whereas economic goods are कि जैसे मेरी गाड़ी में मना कर दूंगी भाई don't sit in my car, right? These are my clothes. This is my food. So जिसके लिए मैं किसी को मना कर सकती हूँ यूज करने के लिए, these are economic good, जिसको मैंने खुद बनाया, man made है, लोगों ने बनाया है और scarce है, unlimited नहीं है. But the free goods are unlimited, that are not scarce. उनकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं होती. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी इन डिटेल नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन में पढ़ेंगे. और ये गिफ्ट ऑफ नेचर होता है और ज़्यादातर हम कहते हैं सनलाइट, एयर, इसकी बहुत ही ईजी कोई एग्जाम्पल्स है. आई होप कि यहाँ तक आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे. In future again I am going to discuss about the next topics which are going to be in the Cambridge outline. उसी syllabus को follow करते करते मैं इंशाल्लाह अपनी अपनी videos बनाती जाऊंगी. Thank you so much. See you soon. Allah Hafiz.